lot of truth, which a lot of sufferings in the society have also been brought up by you. A lot of truth has been brought out by you. So one spends a lot of time, and there's a lot of learning curve that one goes through with you. But when sad incidents happen, when the truth is not reported, and you are condemned in the society for nothing that you've done, it's a sad day. It'll take 5 years for the truth to come out. But for those 5 years, whether it's me or whether it's that sub-inspector, our families and we have to suffer in person. So I guess we need to be responsible at either ends so that such a thing does not happen. And मैं वो गल याद कराऊंगा कि अखबार दी किसी ने क्या ताकत की है, एक शायर ने लिखा किते मेरे ते ना लिख दियो, हर हकीकत को मेरी खाक समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। So journalism is a very, like I said, journalists are रब तो बाद जे किसी नूं मत्था टेकी जाना तो थोनू टेकी जा सत्कार ते तुसी भी जदों रब तो बाद थोड़े ते इन्ना सत्कार देई जा, या तो फ्लाइंग माइल्स फिर दियो, कुछ ना कुछ तो करो, गरीबां ते भी गरीब नवाज हो। ते मैनू लगता है जिवें परमात्मा सब नूं दिंदा है ना, ते असीं भी ये आस रखते हैं कि जर्नलिस्ट एज अ, like you rightly said, to be fair, to be honest, to be truthful, to be daring, and above all with no self thoughts in his mind. And I guess when that day actually comes, as politicians also, as lawyers also, as everybody, this will be a better society. This will be a society that we talk about, and you won't be fighting or taking up these causes. Your own newspaper owners will call you that they don't need a Justice Majithia Commission report, or they don't need the Public Relations Minister as Mr. Majithia to recommend what is duly yours. He will call you himself, and you will sit across the table, and the just will be delivered. So with those words, मैं अखीरली गल ये कह के चलिया कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, इंसानियत सिखानी जो मन में वो पीर जिंदा रख. And with those words, these words that I have always kept very close to my heart. शहीद भगत सिंह ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ when he was about to be hanged. And when he was about to be hanged, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਨ फिदा कर चले हाँ, शरीरों को रूह से जुदा कर चले हाँ, कोई हरगिज फिक्र ना करना हमारा, हम अपना ये फर्ज अदा कर चले हाँ. कि जिस दिन सारे फर्ज की अदायगी करने लग जाएंगे, हिंदुस्तान will be a better place. It will be the place that we dream of. Thank you very much, and sorry if I've offended anybody with no offenses. If I take all my words back, but thank you very much for having me.